न्यूज एंड न्यूज, देखिए सिर्फ हकीकत। न्यूज़ एंड न्यूज़ में आपका फिर एक बार स्वागत। इस वक्त हमें इस्लाम जिम खाना में, और रीज़न ये है कि एक आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान जिन्होंने 2019 में अपनी सर्विसेज से रेजिग्नेशन दिया। रीज़न जो था वो उनकी एक किताब है विच सेज दैट एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। I think this book is a self-explanatory as to why he resigned from an IPS officer's post. उनका ही एक इवेंट है जिस पे हम न्यूज़ एंड न्यूज़ आया है। यहाँ पर बुक लॉन्च है इनका, जहाँ पे मुंबई के इंटेलेक्चुअल्स, थिंक टैंक्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस सब गैदर हैं। हमने भी यहाँ पर आके इस इवेंट को इस्लाम जिम खाना में इसको कवर किया। दिस एंटायर इवेंट वॉज ड्राफ्टेड बाय यूसुफ अब्राहनी अलॉन्ग विथ अब्दुल रहमान साहब। मुस्लिम समुदायातले कार्यकर्ते नव्यानं आता राजकारणामध्ये येत आहेत, ही फॅक्ट आहे। मुस्लिम राजकारणामध्ये महिला प्रतिनिधी सुद्धा आता नव्यानं येत आहेत, ही अत्यंत सकारात्मक बाब। पण त्यांनी नेमकं येऊन काय करायचं, कशासाठी यायचं? केवळ धार्मिक मुद्द्यावर आपण यायचं का? केवळ अॅट्रॉसिटीला विरोध करण्यासाठी म्हणून यायचं का? तर नाही। 2019, you resigned from your services. You wrote a book which is self-explanatory. किताब पढ़ेंगे सब समझ में आ जाता है। इतना बड़ा डिसीजन that you left your services. देखिए, जो मुसलमान जो हैं, they are the biggest minority in the country. They are the second largest majority in the country. If they goes out of mainstream, it is not their loss, it is the loss of the nation. If they are in the mainstream and if they contribute something, it becomes a national contribution. Country will go ahead. So keeping that in mind, I have written this book. Lovely reassuring words from you. So what do you feel? Do you endorse this book? Of course I endorse this book. I endorse this book because I strongly believe that the exclusion of Muslims from politics, from power, from education and employment and development, this exclusion must end. And you said a very important point, crucial point, which said that you have to take Hindus along with you if you want success. I want you to elaborate slightly on that. Because you see, Hindus and Muslims are brothers. We have lived together here for centuries. Muslims are not separate from us. So if there is pain in the hearts and minds and the bodies of Muslims, we must feel it. Yes. If I'm a true Hindu, if I'm a true Muslim Indian, I must feel the pain of Muslims. संत ज्ञानेश्वर ने क्या कहा? हर एक की पीड़ा, हर एक का दर्द, वो मेरा दर्द है, इसलिए मैं इंसान हूं। ये संत ज्ञानेश्वर का सोच है। जो ये इनिशिएटिव लिया है, he is an IPS officer. When you talk about IPS officer, it means that he is well researched. He is also an IITian. He has done his IIT from Kanpur. What do you think कि ये जो किताब इन्होंने लिखी है, ये कहाँ तक जाएगी? ये किताब बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि इसका दिल्ली के अंदर भी जब इन्होंने लॉन्च किया था तो इसका अच्छा ओपिनियन आया था, रिव्यू अच्छे आए हैं, किताब के लोग पढ़ रहे हैं उसको। और अब पढ़ूंगा मैं भी। मुझे किताब पढ़ने के लिए सिर्फ एक रात चाहिए। एक रात मुझे मिल गई, मैं लेके बैठ जाऊंगा और किताब पढ़ूंगा। मैं आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि किताब है, मिल रही है, आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, आप इस किताब को जरूर पढ़िए। देखिए, The greatest part about the book is the data part. Normally, datas are doctored, but the data which is there in the book, which has come from the IPS officer, I think that data is the real data. Is that correct, sir? Yeah. I have collected and presented in my book lot of data regarding their participation in a parliamentary election, their participation in various state assembly elections, the nomination by various political parties, the Muslim majority parliamentary constituencies, assembly constituencies. I think in the long run,
this data is going to help the Muslim community. You did try to find out the future course of Mr. Rehman, and you did try to instigate or ask him. So there is basically an ideological shift from the administrative bloc to the political bloc. Do you think that in the future he'll get into the parliament? Basically, there are a handful of Muslim IAS and IPS officers in Maharashtra. Even in the country, that number is very abysmal. So my contention is that an able, efficient officer like Abdur Rehman Sahab, he resigned from his services. That resignation has not been accepted so far. So I have requested him. There are two options before you. Either you go back, take that uniform and let the Muslim community feel proud that yes, one of our brothers is also an IPS officer. Or the second option is come with me to Lok Sabha. We'll fight Narendra Modi there. Come with you means MIM. Not necessary. Not necessary. See, I'm not saying that. See, ultimately the most important thing is I'm not saying that every Muslim should come to MIM. No. देखिए, ये जो देश में संविधान है, इसमें चर्चा परिचर्चा विरोध करना, ये हमारी संविधान ने ताकत दिया है। तो ऐसी चर्चाएं परिचर्चाएं होनी चाहिए। और इन्होंने जो टॉपिक उठाया है, इस पे जिस तरीके की चर्चा हो रही है, ये सबके लिए बहुत बढ़िया जानकारी है। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, पार्टी डिफरेंस हो सकती है, लेकिन जो एक मकसद है वो देश को एक करने का है, सारे समुदाय को साथ में लेके चलने का है। और अल्टीमेट संविधान जिसने बनाया था, जो देश की सोच थी, यही थी। ये इवेंट अब्दुर रहमान साहब का बुक लॉन्च के बारे में, आई थिंक द टाइटल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसके बारे में कुछ ज़्यादा, बट हाउ डू यू फील कि ये जो इनिशिएटिव है ये क्या है एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Well, I have not read the entire book as it is just given to me right now, just few hours back. And I could just go through certain paragraphs in the book, and one of the paragraphs I quoted regarding the leadership. How should be a Muslim leader? What is the qualities? And I am quite impressed, and I am sure that if qualities are searched among these people who are here, I will tell you 90% of the people who are here, they must have been getting this quality. They have this. Why is Enforcement Directorate not touching you people? Tell them to please go ahead, na. Who's stopping them? Tell Enforcement Directorate, tell CBI, tell Income Tax to go after Imtiaz Jalil. Or let's wait for some years when Congress government will come into power. Uske andar let them arrest that time. It's said that whoever. There was a government of the Congress party in Telangana. Why did they not arrest Owaisi Sahab? There was a government of the Congress in Maharashtra. Why did they not arrest? देखिए, ये डराने वराने के बातें जो है ना, ये किसी और से करिएगा उसके अंदर। ये मजलिस के नुमाइंदे हैं, ये डरने वरने वालों में से। That's it for today. Keep watching News and News. देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़। देखिए सिर्फ हकीकत।